Good afternoon to all. So last lecture we have seen vector equation of plane. So vector equation of plane which is equal to, am I audible? माझा आवाज ऐकू येतो ना सगळ्यांना? So vector equation of plane which is a r dot n a dot n, which is a vector equation of the plane. Similarly, Cartesian equation of plane a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0. This is a vector and Cartesian equation of the plane. Cartesian equation of the plane can be written as ax plus by plus cz plus d equal to 0. Then find a vector. Also we have seen the examples depends on this, that is a vector equation of plane using r dot n a dot n. Also Cartesian equation using the formula a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0. Also we have seen the vector equation of the plane passing through the point and parallel to b and c is r dot a dot r minus a dot b cross c is equal to 0. Here a, that is passing through the point and parallel to the vector a and b and c. Okay, so the vector equation of the plane like this, r minus a dot b cross c equal to 0. This is a r is equal to a plus lambda b plus mu c is a vector equation of the plane in parametric form. Also we have seen the examples depends on this. Then vector equation of the plane passing through three non-collinear points. The equation, vector equation will passing through 3 points, which is equal to r minus a dot b minus a cross c minus a equal to 0. So this is the equation of plane passing through 3 points. 3 points के लिए ये equation है. r minus a dot b minus a cross c minus a equal to 0. Okay. Also Cartesian equation passing through 3 points, x minus x1 y minus y1 z minus z1, ये फर्स्ट रो है. सेकेंड रो में x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1. x3 minus थर्ड रो में x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1, where x1 y1 z1 coordinates of a, y1 y x2 y2 z2 coordinates of b or coordinates of second point, and x3 y3 z3 coordinates of third point, that is c. Also we have seen the examples. Now next, that is a equation of plane at the distance p unit from the origin and to which unit n cap is a normal is a vector r dot n cap is equal to p, which is a normal form of the plane. Normal form of plane, when you use the नॉर्मल फॉर्म हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें डिस्टेंस दिया होगा, है ना. दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन at a distance p, where p is a distance, n cap that is a unit normal vector, r is a any vector. So r dot n cap is equal to p. जब हमें डिस्टेंस दिया होता तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. ये इक्वेशन ऑफ प्लेन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द
कार्टेशियन इक्वेशन, है ना। ये नॉर्मल फॉर्म ही था, लेकिन ये वेक्टर के फॉर्म में था, है ना. दिस इज अ, ह्या नॉर्मल फॉर्मच आहे आपला, पण हा वेक्टर फॉर्ममध्ये आर डॉट एन कॅप इज इक्वल टू पी. डिस्टन्स दिलं असेल तेव्हा हा फॉर्म्युला यूज करायचा. देन एल एक्स प्लस एम वाय प्लस एन झेड इज इक्वल टू पी. हे काय नॉर्मल फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन. दोन आहे, नॉर्मल फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन आहे, नॉर्मल फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन. सो नॉर्मल फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन, that is a Lx plus My plus Nz is equal to P. ये इक्वेशन है उसका. ओके, एग्जाम्पल्स, that is a, this we have seen the examples. Then equation of plane passing through the intersection of two planes r dot n1 minus d1 equal to 0, r dot n2 is equal minus d2 equal to 0. Then equation of plane passing through the line, passing through the point, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, है ना. ये जो है आर डॉट एन वन प्लस लैम्बडा एन टू माइनस डी वन प्लस लैम्बडा डी टू इक्वल टू 0, ये क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन. ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ, जब हमें वेक्टर इक्वेशन दी है तो वी कैन फाइंड लाइक दिस, दैट इज आर डॉट एन वन प्लस लैम्बडा एन टू माइनस डी वन प्लस लैम्बडा डी टू. आर डॉट एन वन माइनस डी वन इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन. और उसका सेकेंड इक्वेशन है आर डॉट एन टू माइनस डी टू इक्वल टू 0. देन इफ द, ये वेक्टर इक्वेशन, अभी कार्टेशियन इक्वेशन लाइक दिस. कार्टेशियन इक्वेशन कैसे होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0. सो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स लाइक दिस, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्बडा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0. यहाँ पर ये हमने 11th में स्ट्रेट लाइन में देखा था. देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. फैमिली ऑफ लाइन में हमने ये फॉर्मूला देखा था, वही यूज़ करना है. ये जो कार्टेशियन इक्वेशन है, वेक्टर में भी वही करना है कि आर डॉट एन वन प्लस लैम्बडा एन टू माइनस डी वन प्लस लैम्बडा डी टू इक्वल टू 0. ये एग्जाम्पल उसका देखो, वेक्टर का एग्जाम्पल लिया पहले. फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन. वेक्टर दिया है ना, वेक्टर पूछा है तो वेक्टर, कार्टेशियन पूछेंगे तो कार्टेशियन. ओके, वेक्टर पूछा है यहाँ पे. फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 0, 2 एंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 8, आर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू 3, है ना. सो वी नो द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, r dot n1 plus lambda n2 minus d1 plus lambda d2 equal to 0, r dot I plus j plus k plus lambda 2i plus 3j plus 4k is equal to 8 plus 3k, 3 lambda. Okay, therefore d1 that is 8 है यहाँ पे, और d2 क्या है 3. सो 8 प्लस 3 लैम्बडा इक्वल टू 0. इक्वेशन 1 इसमें पुट किया सिर्फ, बिकॉज वी नो द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन इज ऑफ द फॉर्म आर डॉट n1 प्लस n1 आर डॉट n1 प्लस लैम्बडा n2 माइनस d1 प्लस लैम्बडा d2 इक्वल टू 0.
है ना. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n1 क्या है हमारा i प्लस जे प्लस के, n2 क्या है 2i प्लस 3j प्लस 4k, वैल्यू पुट करेंगे. और ये d1 प्लस लैम्बडा d2 RHS में शिफ्ट कर दिया उसको, है ना. तो d1 क्या है हमारा 8, d2 क्या है 3, 8 प्लस 3 लैम्बडा. ओके. सो r डॉट दिस. नाउ collecting the coefficient of I, J, K. So we get 1 plus 2 lambda, 1 plus 3 lambda, 1 plus 4 lambda K is equal to 8 plus 3 lambda. Okay. And also we are given that the plane passes through the point 1 comma 0 comma 2. Now here put the value of the plane passes through the point 1 comma 0 comma 2. Now put the value of here 1 comma 0 comma 2. Therefore I plus 2k 1 plus 2i plus 1 plus 4 lambda k is equal to 8 plus 3 lambda. Okay. Now putting the here the value of that is ijk का वैल्यू क्या करेंगे हम, I is replaced by 1, j is replaced by 0 and k is replaced by 2. Okay. So is equal to now first taking the dot product. Dot product लिया यहाँ पे I into 1 plus 2 lambda 1 plus 2 lambda, डॉट प्रोडक्ट लिया I plus 2 lambda, I into 1 plus 2 lambda plus j का नहीं है इसके लिए वहाँ पे 0 आएगा, सिर्फ क्या बचेगा फिर 2 इंटू 1 plus 4 lambda is equal to 8 plus 3 lambda. Okay. So 1 plus 2 lambda plus 1 plus 2 lambda plus 2 into 1 plus 4 lambda is equal to 8 plus 3 lambda. So 1 plus 2 lambda, so 7 lambda is equal to 5. See here क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पे, फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 comma 0 comma 2 and the line of intersection of the plane r dot I plus j plus k is equal to 8, r dot 2i plus 3j plus 4k is equal to 3, है ना. So r dot we know the equation r dot n1 plus lambda n2 minus d1 plus lambda d2 equal to 0. Therefore the equation will be reduced to, ये इक्वेशन को कैसे रिप्लेस किया है, r डॉट n1 लैम्बडा n1 प्लस लैम्बडा d2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्बडा d2, है ना. सो r डॉट i प्लस j प्लस के प्लस लैम्बडा 2i प्लस n1 का वैल्यू क्या है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन को कैसे करेंगे हम, r डॉट n1 इज इक्वल टू d1, r डॉट n2 इज इक्वल टू d2, है ना. तो n1 का वैल्यू i प्लस जे प्लस के और n2 का वैल्यू क्या है 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू 8 प्लस 3 लैम्बडा. देयरफॉर r डॉट 1 प्लस 2i 2 लैम्बडा i प्लस 1 प्लस 3 लैम्बडा j प्लस 1 प्लस 4 लैम्बडा k इज इक्वल टू 8 प्लस 3 लैम्बडा. ओके. अभी r द प्लेन इज पासिस थ्रू द पॉइंट 1 comma 0 है ना. r का वैल्यू क्या है हमारा, r इज वॉट xi प्लस वाई जे प्लस जेड के. तो वेक्टर r में हम एक्स वाई जेड के वैल्यू पुट करेंगे. तो x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 0 है और z का वैल्यू 2 है. ओके. सो r कैन बी रिटन एज i प्लस 2k डॉट 1 प्लस 2i या 1 प्लस 2 लैम्बडा i प्लस 1 प्लस 3 लैम्बडा j प्लस 1 प्लस 4 लैम्बडा k इज इक्वल टू 8 प्लस 3 लैम्बडा. डॉट प्रोडक्ट लिया उन दोनों का, 1 प्लस 2 लैम्बडा प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 लैम्बडा इज इक्वल टू 8 प्लस 3 लैम्बडा. सो 1 प्लस 2 लैम्बडा प्लस 2 प्लस 8 लैम्बडा इज इक्वल टू 8 प्लस 3 लैम्बडा. सो 7 लैम्बडा इज इक्वल टू 5. लैम्बडा इज इक्वल टू 5 अपॉन 7.
So from first and second we get r dot I plus j plus k. इसमें पुट किया हमने, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया लैम्बडा का वैल्यू. फर्स्ट इक्वेशन क्या है देखो हमारा, उसमें हमने लैम्बडा का वैल्यू पुट किया. फर्स्ट इक्वेशन. सो r dot I plus j plus k plus 5/7 2 I plus 3j plus 3k 4k is equal to 8 plus 3 into 5/7 r dot 17I plus 22j plus 27k is equal to 71. Similarly we can find ये आपको वेक्टर इक्वेशन दिया था, कार्टेशियन इक्वेशन में भी वैसे ही करना है ना. ax प्लस बी वाई प्लस जे, वहाँ पे भी आपको पॉइंट्स दिया होगा, तो वो पॉइंट्स का वैल्यू पुट करना है. इज इट क्लियर? समझ लो. इज इट नेसेसरी टू एक्सप्लेन अगेन? एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है फिर से. Now next example. Find the vector equation of plane which is at 42. ये आपका 6.3 है, उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है. एक्सरसाइज 6.3 दैट इज अ फर्स्ट एग्जाम्पल. Find the vector equation of plane which is at 42 units distance from the origin and which is a normal to the vector 2i plus j minus 2k. यहाँ पे हम कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे? नॉर्मल फॉर्म, है ना. लेट नॉर्मल फॉर्म मतलब r डॉट एन कैप विच इज इक्वल टू p, है ना, विच इज़ अ नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल वेक्टर फॉर्म. सो लेट n bar which is equal to 2i plus j minus 2k. n bar is a unit vector along the normal. इसका यूनिट वेक्टर निकालना है. You know how to find the unit vector. n cap which is equal to n bar upon magnitude of n. So 2i plus j minus 2k under root 2 square plus 1 square plus minus 2 square is equal to 2i plus j minus 2k under root 4 plus 1 plus 4 2i plus j minus 2k upon 3 and p is equal to 42. And we know the vector equation of the plane r dot n cap is equal to p. r dot 2i plus j minus 2k upon 3 is equal to 42. r dot 2i minus j plus minus 2k is equal to 3 shift RHS 26 into 42 into 3, that is a 126. Okay. So in this way we can find the vector equation. Okay. Yes, is it clear? नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन है ये 6.3 अपना. नेक्स्ट एग्जाम्पल. फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन 6x minus 2y plus 3z minus 7 equal to 0. Okay. So the given equation क्या है? 6x minus 2y plus 3z minus 7 equal to 0. इसको कंपेयर करेंगे कार्टेशियन इक्वेशन से. ax plus by plus cz plus d equal to 0. a is equal to 6, b is equal to minus 2 and c is equal to 3 and d is equal to minus 7. Now here we use normal form of the equation of plane in normal form, which is a Cartesian equation. Cartesian equation of the plane in normal form. So for this we want LMN. So what is the LMN? That is a direction cosines. जो हमें वेक्टर दिया होता है और कार्टेशियन इक्वेशन दिया होता है उसमें ए बी सी दे आर द डायरेक्शन रेशियो. सो यूजिंग द डायरेक्शन रेशियो वी कैन फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस. ओके. सो एल इज इक्वल टू 6 अपॉन
a square plus b square plus c square. So 6 square plus minus 2 square plus 3 square. Similarly, m is equal to minus 2 upon under root 6 square plus minus 2 square plus 3 square. N is equal to 3 upon under root 6 square plus minus 2 square plus 3 square. Okay. So L is equal to 6 upon 7, M is equal to minus 2 upon 7, N is equal to 3 upon 7. Okay. So put here the value of this, that is a Cartesian, L is equal to 6, Cartesian equation of plane in normal form we know 6 Lx plus my plus nz is equal to p. 6 upon 7x minus 2 upon 7y plus 3 upon 7z is equal to 7 upon 7. Therefore distance of the plane from the origin is a 1. In this way we can find. आधीचं जे इक्वेशन होतं, सो पहले एग्जाम्पल देखा था, वहाँ पे हमने वेक्टर इक्वेशन यूज़ किया था. नॉर्मल मीन्स वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म. यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म यूज़ किया, मतलब नॉर्मल फॉर्म था कार्टेशियन इक्वेशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल, reduce the equation r dot 3i plus 4j plus 12k is equal to 78 to normal form, and hence find the length of perpendicular from the origin and direction cosines of the normal. Okay. Now see, we are given, आपल्याला हे इक्वेशन कुठल्या फॉर्ममध्ये दिलं, हे नॉर्मल फॉर्ममध्ये नाही, याला नॉर्मल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करायचं आहे ना. आता नॉर्मल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी काय आहे फॉर्म्युला नॉर्मल फॉर्मचा, आर डॉट एन कॅप इज इक्वल टू पी है ना. नाव आर डॉट, वी आर गिवन द इक्वेशन आर डॉट 3i प्लस 4j प्लस 12k इज इक्वल टू 78. हे आपल्याला नॉर्मल फॉर्ममध्ये नाही दिलं आहे, हे आर डॉट एन बार विच इज इक्वल टू 78. So r n bar which is equal to 3i plus 4j plus 12k. Magnitude of n which is equal to magnitude of n under root 3 square plus 4 square plus 12 square is equal to under root r n plus 9 plus 16 plus 144 which is equal to 30. Okay. So the r dot n cap 78 can be written as r dot n bar upon n magnitude of n which is equal to 78 upon n. Okay, therefore r dot 3 upon 13 I plus 4 upon 12 j plus 12 upon 13 k. सॉरी, ये जो सेकेंड है वहाँ पे 13 ही है, 12 नहीं है. मैग्नीट्यूड ऑफ एन है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एन क्या है 13 आहे. हे सेकंड लास्टचं जे आहे इक्वेशन याच्यात 12 नाही 13 आहे. हे पहा आर डॉट, आपलं ओरिजिनल इक्वेशन काय आहे, आर डॉट एन बार विच इज इक्वल टू 78. नॉर्मल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपल्याला एन वेक्टर एनला कशामध्ये कन्वर्ट करायचं, युनिट वेक्टरमध्ये. बरोबर की नहीं. आता यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या करेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ एन से उसको डिवाइड करेंगे थ्रू आउट द इक्वेशन, है ना. तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन क्या निकाला हमने 13. ओके, सो डिवाइड किया 13 को, आर डॉट 3 अपॉन 13, यहाँ पे ये 12 बाय मिस्टेक आया, ये 13 ही है. 4 अपॉन 13, 12 अपॉन 13 के 78 अपॉन 13. ओके, सो आर डॉट 3 अपॉन 13, 4 अपॉन 13, 12 upon 13 is equal to 6. So P is equal to 6. So length of perpendicular 6. Cartesian equation Lx plus My plus Nz is equal to P. So ये क्या है 3 upon 13, 4 upon 13, that is the direction cosines. Okay, normal equation दिया था हमें, जो इक्वेशन दिया था r dot n उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन यूजिंग दिस फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस एंड
also convert this into the normal form. See here, find the Cartesian equation of the plane passing through point and 7, 8, 6 and parallel to the xy plane. The plane passes through the point capital A 7, 8, 6. Point Z x1 is equal to 7, y1 is equal to 8 and z1 is equal to 6. Okay. Since plane is parallel to xy plane, so the direction ratio xy plane है तो direction ratio, that is a is equal to 0, b is equal to 0, c is equal to 1. And the equation of the plane in the Cartesian form, that is a into x minus x1 plus y, b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0. So 0 into x minus 7 plus 0 into y minus 8 plus 1 into z minus 6 equal to 0. Z minus 6 equal to 0. Okay. Next example. Find a vector equation of the plane which makes intercept 1, 1, 1 on the coordinate axis. Now the plane makes the intercept 1, 1, 1 on the coordinate axis, means the plane passes through these points a1, 0, 0, b 0, 1, 1, 0, 1, 0, c 0, 0, 1 be the intersecting point of the plane with the coordinate axis, and uska vector equation find karna. And we know how to find the vector equation passing through 3 points, that is r minus a dot b minus a cross c minus a. Okay. So r minus a b minus a cross c minus a is equal to 0. So first find b minus a, c minus a. So b minus a, yes, what we can find b minus a, 0 minus 1 minus 1, 1 minus 0 1, and which is 0 minus 0 0. Similarly c minus a, 0 minus 1 minus 1, 0 minus 0 0, 1 minus 0 1. Okay. So take their cross product by using determinant, which is equal to I plus j plus k. R minus R minus I dot I plus j plus k equal to 0. R dot I plus j plus k minus I dot I plus j plus k. So R dot I plus j plus k minus 1 equal to 0. Because we know the I dot I1, I dot j equal to 0, I dot k is equal to 0. So R dot I plus j plus k is equal to 1, which is a vector equation of the plane makes intercept 1, 1, 1 on the coordinate axis. देखो यहाँ पे क्या किया है, the plane makes intercept means the plane passing through these points 1, 0, 0, 0, 1, 0 and 0, 0, 1. Then the means equation of plane passing through 3 points. Find the vector Cartesian equation of the plane passing through a minus 1, 2, 3 and direction ratios whose normal 0, 2, 5. Cartesian equation है ना. We know Cartesian equations, that is a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 and direction ratios भी दिए, मतलब a का वैल्यू 0 है, b का 2 है, c का 5. Only putting the value of a, b, c and x1, y1, z1 we get the required equation. So यहाँ पे passing to the point दिया है a minus 1, 2, 3, मतलब x1 is equal to y minus 1, y1 is equal to 2, z1 is equal to 3. Directions ratio, that is a is equal to 0, b is equal to 2, c is equal to 5. So the equation of plane in Cartesian form, a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1
is equal to 0. Putting the value of a, b, c and x1, y1, z1, therefore we get the Cartesian equation. Okay. So 2y plus 5z is equal to 90. Okay. So in this way we can find the equation of plane. So in the next lecture we will see that is a angle between line and plane, angle between two planes. Okay, so angle between and also find the distance of a plane from a point. Okay, so remaining we will see tomorrow. Or in the next lecture. After that our plane chapter is finished. Now tell me what about next, that is a linear programming, start or not, or take the revision from first unit, from first chapter. आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपलं हे जे आहे म्हणजे लाईन आणि प्लेन फिनिश होईल, बरोबर. मग त्याच्यानंतर काय करायचं, लिनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करायचं. फक्त लिनियर प्रोग्रामिंग राहतं आपलं. तर लिनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करायचं का आपलं जे आहे फर्स्ट चॅप्टरपासून थोडं रिव्हिजन घ्यायचं, तुम्हाला जे अडले आहेत ते, तर ते तुम्ही सांगा. मग मी मला तसं चॅटवर पब्लिश करा. तुम्ही सगळेजण ठरवा आणि मला सांगा की काय करायचं आपण. उद्या सांग ठरवून. उद्या नेक्स्ट लेक्चर जेव्हा मी घेईल तेव्हा मला ते सांगा तुम्ही ठरवून की नेक्स्ट लेक्चरला आपलं हे संपेल, हे चॅप्टर लाईन अँड प्लेन, बरोबर ना. मग फक्त एकच राहतं आपलं LPP. तुम्ही सांगणार तर LPP मी स्टार्ट करेल. LPP स्टार्ट करेल फ्रायडे सॅटर्डेला. जर नाही तर मग रिव्हिजन घ्यायचं. तुम्ही सांगा काय करायचं. ओके, चला बाय. पण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघू बाकीचं. काय डाऊट्स आहेत का कोणाला? काय डाऊट्स असतील तर विचारा.